एंड पाइथन से मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, रेगुलर एग्जामिनेशंस में MCQs बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. एंड गाइस पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके जो आपको कॉर्नर में शो हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. गाइस पार्ट 2 देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 चेक कीजिए. एंड पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट 2 इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन गाइस क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द सेशन. In this, your first question is, what is the return type of function ID? Option A, B, C, D are given here. Option A, int. Option B, float. Option C, bool. Option D, dict. Okay. Correct answer of this question is option A, int. Return type of function ID is int. Okay. Because help of ID जब आप function को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या क्या वर्क कर रहा है, तो आप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं. आप हेल्प कमांड यूज़ करते हैं एंड इन द ब्रैकेट आप फंक्शन नेम मेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हेल्प इन द ब्रैकेट आईडी. टू फाइंड आउट डिटेल्स इन पाइथन आप यूज़ कर सकते हैं. एंड shell dot id returns a integer value, okay, and that is unique integer value for each and every integer in your Python program. Okay, so correct answer of this question is int. Next question, what are the advantages of functions in Python? Option A, reducing duplication of code. Option B, decomposing complex problems into simpler pieces. Option C, improving clarity of the code. Option D, all of the mentioned. Okay, guys, just listen to me very carefully. Advantages of functions include reducing duplication of code. Okay, it's pretty simple. जब आप functions यूज करते हैं तो आपको एक कोड को 2 to 3 times अपने प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, ऐड नहीं करना होता है. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, आपका डुप्लीकेट कोड रिड्यूस हो जाता है. ओके, दिस इज एडवांटेज ऑफ फंक्शन. सेकेंड वन, decomposing complex problems into simpler pieces. जब आप functions के थ्रू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सिंपल पीसेस में डिवाइड करके one or more functions create करते हैं. Okay, so this is also the advantage of function in Python, decomposing complex problems into simpler pieces. Okay, C is improving clarity of the code. गाइज ये तो अपने आप से समझने वाली बात है. जब हमारा प्रोग्राम पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, हमारे कोड में नंबर ऑफ डुप्लीकेशन कोड नहीं होंगे. सो इट्स वेरी सिंपल, इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. ओके, so option C is also the advantages of function. So correct answer here, option D, all of the mentioned. Next question, what are the two main types of functions? Option A, custom functions. Option B, built-in function and user-defined function. Option C, user function. Option D, system function. Correct answer of this question is option B, built-in function and user-defined function. Okay. There are two main types of functions in any languages. First one, built-in functions, and second one, user-defined function. The built-in functions are part of the languages. जिस language पे आप work कर रहे हैं, for example Python, for example C, for example Java. Okay, and for examples are dir function, len function, abs function. They all are the examples of built-in functions. Okay, and the user-defined functions are functions created by the def keyword, def keyword के थ्रू आप क्रिएट करते हैं user-defined functions in Python language. and ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं गाइस, ये user-defined होते हैं. यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, where is function defined? Option A, module. Option B, class. Option C, another function. Option D, all of the mentioned. Correct answer of this question is option D, all of the mentioned. It's up to you, it's users need. आप functions inner module define कर सकते हैं, inner class define कर सकते हैं, inner another function define कर सकते हैं. Okay, it's up to you. आप functions को मॉड्यूल में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं, किसी अनदर फंक्शन के अंदर किसी अनदर फंक्शन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं. कोई restrictions नहीं है. Okay, so correct answer of this question is option D. Next question,
What is called when a function is defined inside a class? Option A, module. Option B, class. Option C, another function. Option D, method. Correct answer of this question is option D, method. Okay. Method is called when a function is defined inside a class. जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास के इनर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पर आप किसको कॉल करते हैं? मेथड को. ओके, मेन मेथड को. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the use of id function in Python? Option A, id returns the identity of the object. Option B, every object doesn't have a unique id. Option C, all of them mentioned. Option D, none of them mentioned. Correct answer of this question is option A, id returns the identity of the object. Okay, because the id function returns a unique id for the specified object. All object in Python has its own unique id and the id is assigned to the object when is created. Okay, I hope it's clear now. Next question. Which of the following refers to mathematical function? Option A, sqrt. Option B, add. Option C, rhombus. Option D, delete. Correct answer of this question is option A, sqrt. Okay, functions that are always available for uses, functions that are contained within external modules, which must be imported, and functions defined by a programmer with the def कीवर्ड, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में. फॉर एग्जांपल, मैथ इंपोर्ट sqrt. सो गाइस, यहाँ पर जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो है sqrt एंड ये किस मॉड्यूल का फंक्शन है? ये मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है. अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो आप इसको किस तरह इंपोर्ट करेंगे? आप इसके मॉड्यूल का नेम देंगे, दिस इज मैथ, देन आप इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन आप फंक्शन नेम मेंशन करेंगे जो पर्टिकुलर फंक्शन आपको import करना है. Okay, so a sqrt function is imported from the math module. Okay, next question. What will be the output of the following Python code? A div cube, यहाँ पर एक cube नाम का function define किया है, then returns x multiplication x, then x is equal to cube of 3, then print x. यहाँ हमें x की वैल्यू प्रिंट करनी है. Guys, here a function is created to do a specific task and task is x multiplication x. Okay, often there is a result from such a task. The return keyword is used to return values from a function. Okay, this is, so return value is what? This is 3. Okay, and a function may or may not return a value. If a function doesn't have a return keyword, it will send a नन वैल्यू. तो यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है तो हमारा फंक्शन हमें रिटर्न वैल्यू देगा विद द हेल्प ऑफ क्यूब ऑफ 3. वैल्यू ऑफ x इज 3. सो 3 मल्टीप्लिकेशन 3, इट्स लीड टू बी 27. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 27. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Python supports the creation of anonymous functions at runtime using a construct called blank space. Option A, lambda. Option B, pi. Option C, none. Option D, all of the above. Correct answer of this question is option A, lambda. Lambda is very important concept in Python. Okay, Python supports the creation of anonymous functions, that is, functions that are not bound to a name. Okay, and lambda is an anonymous function in Python, as you know, and the functions are creating using a construct called lambda. Lambda functions are restricted to a single expressions. They can be used whenever normal functions can be used. Okay, so correct answer of this question is option A, lambda. Python supports the creation of anonymous functions at runtime using a construct called lambda. Next question. What will be the output of the following Python code? Here simple एक function define है, function f. In function x, y, z, then return for returning the value. Then हमें perform करना है x plus y plus z, and what is the value of x, y and z is 230 and 400 respectively. So यहाँ पर function call करके आपको क्या value return करेगा? Just sum return करेगा, जो कि हमने
मेंशन किया है, मीन्स 2 + 30 + 400. Okay, it's equal to 432. Okay, so correct answer of this question is option B. Next question, which of the following functions is a built-in function in Python? Option A, seed function. Option B, sqrt function. Option C, add function. Option D, print function. Okay, here correct answer of this question is option D, print function. Okay, in Python built-in function is print. उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल डिफाइन नहीं करना होता है, जस्ट आपको प्रिंट मेंशन करके अपना स्टेटमेंट मेंशन कर देना होता है. ओके, बट अगर हम यहाँ बात करें एक फंक्शन की, sqrt फंक्शन, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, बट इट्स फ्रॉम मैथ मॉड्यूल. इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको साथ में मॉड्यूल भी डिफाइन करना होता है एंड इम्पोर्ट कीवर्ड यूज करना होता है. इसलिए जो यहाँ पर appropriate आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा प्रिंट फंक्शन. Okay, I hope it's clear. Printf function is a built-in function in Python. Next question. What will be the output of the following Python expression? Python expression is a round of 4.576. Okay, in the Python, this is a built-in function which rounds a number to give precision in decimal digits. Okay, look at here. In the above case, means in this case, since the number of decimal places has not been specified. In layman language, अगर मैं आपको explain करूँ तो, राउंड ऑफ फंक्शंस इन द पाइथन किस तरह वर्क करता है, वो आपको डेसिमल डिजिट्स जो भी आप डिफाइन करते हैं उसके प्रिसीजन के अकॉर्डिंग आपको राउंड ऑफ वैल्यू प्रिंट करता है. बट इन दिस केस यहाँ पर कोई भी वैल्यू कोमा लगा के राउंड ऑफ करने के लिए डेसिमल प्लेसेस की गिवन नहीं है, 1 और 2 और 3. अपकमिंग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जहाँ पर हमें वैल्यू गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चेक करेंगे. सो यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? The decimal number is rounded off to a whole number. जब वैल्यू गिवन नहीं होगी, so decimal number is rounded off to a whole number. So correct output will be 5. What is the rounded off is complete value. Complete value को अगर हम round off करते हैं तो वैल्यू आएगी 5. Okay? Because normally मैथ्स में हम round off चेक करते हैं तो 4.4 होता है, तो उसको हम लेते हैं 4 वैल्यू. ओके, राउंड ऑफ करके. बट 4.51 भी होता है, मींस 5 से एक्सीड करता है, तो इसको हम लेंगे 5. इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 5. आई होप इट्स क्लियर. एंड इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 4. ओके गाइस, सो राउंड ऑफ दिस वैल्यू 4.576 इज 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the output of the following Python function a all2406? All is a function in Python. Okay, option A, B, C, D are given here. According to all functions, all returns false if any one of the elements of the iterable is 0. Here, one iterable is 0. This is okay. I hope it's clear. And all returns true if all the elements of the iterable are non-zero. Okay, but in this case a iterable should be 0 of index 2. Okay, this is 0. That's why outcomes of this function is false. Option C is correct here. Next question. What will be the output of the following Python expressions a round of 4.5676, 2? इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे. यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना है. कहाँ तक हमें वैल्यू गिवन है? यहाँ पर 2. मीन्स हमें डेसिमल के 2 नंबर स्पेसिफाइड है राउंड ऑफ करने के लिए इस वैल्यूज को. ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन? इन दिस केस द नंबर शुड बी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 गिवन है यहाँ पर. सो correct output of this question is 4.57. Okay, next question. What will be the output of following Python function a of sum 246 then sum of 1 2 3? In this case the first function will result is an error, this one, sum of 246, because the function
sum function is used to find the sum of iterable numbers. sum functions यहाँ iterable numbers के लिए iterable number के sum के लिए use हुआ है. It's incorrect in Python. And second one is sum of parentheses then bracket 1 2 3. This is correct syntax in Python. Its outcomes to be sum of 1 comma 2 comma 3. It's 2 be 6, 1 plus 2 plus 3 is 6. So correct answer of this question is error and 6 respectively. I hope it's clear. Okay. Here the first function will result in an error because the function sum function is used to find the sum of iterable numbers, and the outcomes will be error and 6 respectively. Okay, जो 6 मिलेगा guys वो हमें इस function से मिलेगा. Next question. What will be the output of the following Python function? Complex in the parenthesis 1 plus 2j. Option A, B, C, D are given here. According to this question, complex is a built-in function in Python. Just remember that. And it returns the argument in a complex form. For example, 1 plus 2j, 0 plus 2i. Okay. Hence, the output of these functions will be 1 plus 2j. What is the complex value here? 1 plus 2j complete. So, outcome of this function is 1 plus 2j. Okay. Next question. What is the output of the function complex function? So, यहाँ पर कुछ भी given नहीं है in the parenthesis. Option A, B, C, D are given here. And in this case, correct answer is option A, 0j. Okay. Next question. Which of the following functions accept only integers as arguments? Option A, odd function. Option B, min function. Option C, max function. Option D, chr function. Correct answer here is option D, chr function. Okay, now function chr accepts only integers as argument. Okay, the function odd accept only string, and the function min and max can accept floating point as well as integer arguments also. So here question is functions accept only integers as argument. So correct answer of this question is option D, chr function accepts only integers as arguments. Okay. Next question. Which of the following functions will not result in an error when no arguments are passed to it? Option A, float function. Option B, all function. Option C, div function. Option D, div all function. Correct answer of this question is option A, float function. Okay. The built-in function, min function, max function, div mode function, odd function, any function, all function, etc. throw an error when no arguments are passed to them. Okay. ये वो functions हैं अगर आप arguments pass नहीं करते हैं तो error generate करते हैं. However, there are some built-in functions like float function, complex functions, etc., which do not throw an error when no arguments are passed to them. And output of float function, empty float function is 0.0. And they don't throw an error when no arguments are passed to them. Okay. So here all function, div function, and div all functions generate errors. So correct answer of this question is option A. Next question. What will be the output of the following Python function? Function is hex of 15. Option A, B, C, D are given here. Okay, the function hex function is used to convert the given argument into the hexadecimal representation. So what is the hexadecimal representation of 15? Is 0xf. बट आपको ख्याल रखना है जब हेक्स फंक्शंस हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है तो वो आपको इन लोअर केस प्रोवाइड करता है. ओके, लोअर केस मीन्स इन स्मॉल लेटर्स. सो हियर करेक्ट आंसर इज नॉट टू बी ए 0xf in upper case. No, correct answer is option B, 0xf in lower case letters. Okay, so hence the output of the function hex of 15 is 0xf in lowercase. Next question. Which of the following functions doesn't throw an error? Correct answer of this question is option C, odd
then in the parenthesis single comma. Because the function odd function accepts a character, hence odd function odd with single inverted comma and odd with double inverted comma throws errors. Okay. However, the function odd is in single commas doesn't throw an error because in this case we are actually passing a blank space as an argument. Okay. So the output of odd in single commas one time space is 32 means ASCII value corresponding to blank space. Okay. So correct answer of this question is option C, odd in the parenthesis single commas. Okay. Next question. What will be the output of the following Python function? Length of hello 246. Okay. In the Python language, the function len function returns the length of the number of elements in the iterable and its start with 1. Okay. Therefore, the output of the function this is leads to be 1, 2, 3 and 4. Okay. So correct length of this function is 4 and correct answer is option A. Next question. Which is the most appropriate definition for recursion? Option A function that calls itself. Option B, a function execution instance that calls another execution instance of the same function. Option C, a class method that calls another class method. Option D, an inbuilt method that is automatically called. Correct and appropriate definition of recursion is option B. A function execution instance that calls another execution instance of the same function. Okay, because in the recursion, a recursive function is function execution instance that calls another execution instance of the same function either directly or indirectly. Okay, next question. Which of these is false about recursion? Option A, recursion functions can be replaced by a non-recursive function. Option B, recursive function usually take more memory space than non-recursive function. Option C, recursive functions run faster than non-recursive function. Option D, recursive makes programs easier to understand. Here, false about recursion is option C. Recursive functions run faster than non-recursive function is false regarding recursion because the speed of a program using recursion is slower than the speed of its non-recursive equivalent. Okay, correct answer is option C. Next question. What is tail recursion? Option A recursive function that has two base cases. Option B, a function where the recursive function leads to an infinite loop. Option C, a recursive function where the function doesn't return anything and just prints the values. Option D, a function where the recursive calls is the last thing executed by the function. Correct answer of this question is option D. A function where the recursive call is the last thing executed by the function. Okay? Because a recursive function is tail recursive when recursive calls is executed by the function in the last. Okay. Next question. Which of these is not true about recursion? Option A, making the code look clean. Option B, a complex task can be broken into subproblems. Option C, recursive calls take up less memory. Option D, sequence generation is easier than a nested iteration. Correct answer of this question is option C. Not true about recursion is recursive calls takes up less memory space in your memory storage. Okay. Because recursive calls takes up a lot of memory and memory is taken up each time the function is called. Okay. So it's not true about recursion. Next question. Which of the following commands will create a list? A, B and C थ्री टाइप से आपको थ्री ऑप्शन आपको यहाँ गिवन है बट हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड ओके आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह लिस्ट क्रिएट करनी है ये तीनों ही कमांड करेक्ट है ओके आप जस्ट एक बार चेक कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज लिस्ट 1 is 2445 सेकंड is 133
Then four element of this list is 1, 2, 3. What is the maximum of list? What is the max of list 1? So here max functions work करेगा guys and क्या return करेगा? Maximum value in this list. So what is the maximum value in this list is 1, 2, 4, 5, 4. Okay. So correct answer of this question is option A, 1, 2, 4, 5, 4. Next question. Suppose list 1 is 3, 5, 25, 1, 3. What is the min of list 1? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं because it's very simple. Okay, it depends on function name. min है तो minimum value आपको रिटर्न करेगा, मैक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा. यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न कराना है. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस लिस्ट? मिनिमम वैल्यू इन दिस लिस्ट इज 1. ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1. Next question. Suppose list 1 is 1, 5, 9. What is the sum of list 1? Here, sum function is returned sum of all elements present in the list. So here, correct answer is 1 plus 5 plus 9. Its lead to be 15. Okay, so correct answer is option D, 15. Next question. To shuffle the list of say list 1, what function do we use? Option A, B, C, D are given here and correct answer of this question is option C. So correctly अगर हमको define करना है list of say list 1 shuffle करने के लिए, so हम define करेंगे random dot shuffle and in the parenthesis your list name. This is list 1 in this case. So correct answer of this question is option C, random dot shuffle list 1. Next question. Suppose list 1 included 4, 2, 2, 4, 5, 2, 1, 0 respectively. Which of the following is correct syntax for slicing operation? Slicing यूजर्स अपने अकॉर्डिंग की नीड करते हैं. यूजर्स को जो पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है लिस्ट की उसके अकॉर्डिंग करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है. इट्स अप टू यू, इट्स यूजर्स नीड. आपको कौन से पार्ट की स्लाइसिंग करनी है लिस्ट से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड ये तीनों ही फॉर्मेट करेक्ट है स्लाइसिंग करने के लिए. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose list 1 is 2, 33, 222, 14, 25 respectively. What is the list 1 of minus 1? Okay, option A, B, C, D are given here. Minus 1 लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है 0 से 0, 1, 2, 3, 4. ओके, एंड हियर व्हाट इज -1? लास्ट में आता है जब हम राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं. -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4. आई होप आपको समझ आया होगा. तो हियर व्हाट इज द लिस्ट 1 ऑफ -1? -1 की वैल्यू होगी जो आपके लिस्ट की सबसे लास्ट वैल्यू होगी, उसको हम -1 कंसीडर करते हैं. सो करेक्ट आंसर हियर इज 25. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंडेक्सिंग से, because -1 corresponds to the last index in the list. And what is the value of last index in this list is 25. So correct answer of this question is option C, 25. Next question. Suppose list 1 is 2, 33, 222, 14, 25 respectively. What is the list 1 of colon then -1? Okay. Question number 84 is different from question number 83. Okay. So colon followed by -1 आपको क्या रिटर्न करता है गाइज? आपकी जो -1 ऑफ इंडेक्स वैल्यू है उसको रिमूव करके जो आपका रेस्ट ऑफ द लिस्ट है उसको आपको रिटर्न कर देता है. तो यहाँ से -1 इंडेक्स की वैल्यू इस 25 को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या लिस्ट रिमेन होगी? दिस इज 2, 33 एंड 222 एंड 44. ये एलिमेंट होंगे लिस्ट के हमारे. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2, 33, 222 एंड 14. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose list 1 is 1, 2, 3. What is the list 1 multiplication 2? यहाँ पर जस्ट हमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है with 2. Okay, so its lead to be 1 multiplication 2 is 2, 3 multiplication is 2 is 6, 3 multiplication 2 is 6 and 2 multiplication 2 is 4. So correct answer is 2, 6, 4 respectively. Next question. To add a new element to a list, we use which command? Okay.
किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट में हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड। ओके, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिस्ट वन मीन्स योर लिस्ट नेम डॉट अपेंड एंड इन द पैरेंथेसिस योर एलिमेंट जो आपको अपनी लिस्ट में पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करना है। ओके, इन दिस केस 5। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लिस्ट वन डॉट अपेंड ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, to insert 5 to the third position in list 1 we use which command? Okay, correct answer of this question is option B, list 1 dot insert 3 comma 5. Okay, firstly हम क्या करेंगे, list 1 dot insert command यूज करेंगे, then in the parenthesis जिस पोजीशन पर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है वो पोजीशन मेंशन करेंगे। इन दिस केस दिस पोजीशन इज 3 एंड कोमा लगा के हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमें इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर लिस्ट में। यहाँ पर हमें इंसर्ट 5 करना है तो कोमा लगाकर हम मेंशन करेंगे पोजीशन इट्स 3 कोमा 5 एलिमेंट। ओके, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 3 कोमा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose list 1 is 3, 4, 5, 25, 25, 1 and 3 respectively. What is list 1 after list 1 dot reverse? Reverse function आपको क्या रिटर्न करता है, जस्ट आपकी लिस्ट राइट टू लेफ्ट स्कैन करता है। ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। रिवर्स फंक्शन के थ्रू आपकी लिस्ट राइट टू लेफ्ट स्कैन होके आपको रिटर्न्स वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम इसे राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे तो क्या लिस्ट आउटपुट होगा गाइस? आउटपुट होगा 3, 1, 25, then 5, then 20, then 5, then 4, then 3। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन डी, दिस इज करेक्ट वन। सो इट्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, just reverse of the list। okay, next question, suppose list example is 3, 4, 5, 20, 5, 25, 1, 3। okay, now indexing of this list is 0, 1, 2 and so on। okay, then what is the list 1? What is list 1 after list example dot pop of 1? okay guys, यहाँ पर इन दी पैरेंथेसिस ये 1 आपका एलिमेंट नेम नहीं है, ये इंडेक्सिंग है। ओके, यहाँ पर आप इंडेक्सिंग मेंशन करते हैं जिस पर्टिकुलर इंडेक्स से आपको एलिमेंट पॉप करना है, एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है। पॉप कीवर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली इट्स ए बेसिक कंसेप्ट इन स्टैक। किस लिए यूज करते हैं हम? ये पॉप करने के लिए, एलिमेंट डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट पॉप होगा वो इंडेक्स 1 का एलिमेंट पॉप होगा। ओके, बिकॉज दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 6 and this is 7। okay, I hope it's clear now। so what is the element of index 1 is 4। so after eliminating, after popping the index 1 element, list will be 3, 5, 20, 5, 25, 1 and 3। rest of the list आपको as it is print हो जाएगी। just आपने जो index value दी है उस index value पर जो element present है वो पॉप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर पॉप हुआ है 4। आफ्टर पॉपिंग you will get the answer option C। okay, next question, to open a file in C drive sources.txt for writing be used। okay, इसके लिए आपको ये जस्ट लर्न करना होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये कमांड आपको लर्न करनी है। दिस इज out file is equal to open in this your C drive // scores.txt, then comma, and in the inverted commas W। okay, W is for writing। okay, I hope it's clear। next question, to read two characters from a file object, in file we have blank space। option A, in file.read of 2, option B, in file.read function, option C, inline.readline function, option D, inline.readlines function। ओके, यहाँ पर आप फोकस कीजिए। टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल, आप क्या यूज करेंगे? inline.read of 2। जितने कैरेक्टर आपको यूज करने हैं आप वो यहाँ
मेंशन कर देंगे। आपको 2 रीड करने हैं तो आप 2 मेंशन करेंगे, आपको 2 रीड करने हैं तो आप 2 मेंशन करेंगे, आपको 3 रीड करने हैं तो आप 3 मेंशन करेंगे। So here correct answer is option A, inline dot read of 2. Okay. Next question is very simple and it's similar to question number 92. Just focus on that. To read the next line of the file from a file object in file, we use blank space. Here your correct answer is option C, in file dot read line function. Okay. यहाँ पर आपको क्या करना है, टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, इसके लिए हम यूज करते हैं इन फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीड लाइन्स, यहाँ पर एस है गाइस, फोकस कीजिएगा। फंक्शन मेथड रिटर्न्स, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये आपको रिटर्न करेगा ऑप्शन बी, ए लिस्ट ऑफ लाइन्स, नॉट टू बी लाइन, ए लिस्ट ऑफ लाइन्स। एक पर्टिकुलर फाइल में आपके जितनी भी लाइन्स प्रेजेंट हैं उन सबको ये आपको रिटर्न करेगा। ओके, द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following function doesn't accept any argument? Option A re.purge, option B re.compile, option C re.findAll, option D re.match. Okay, here correct answer is option A re.purge. Okay, re.purge. This function doesn't accept any argument. Okay, next question, what will be the output of the following Python code? In this has generated definition of function x, then yield x plus 1, then g is equal to f of 8, and then print next of g. Okay, focus on this question. Guys, यहाँ पर option ABCD are given here, and in this code returns the value of the expressions x plus 1. Okay, yield x plus 1. Since we have used to the keyword yield, means the value of x is 8. This is जो यहाँ पे given है f of 8 में. Okay, okay, and x plus 1, x is equal to 8 are given this code, so x plus 1 its lead to be 9, means 8 plus 1. So correct answer of this question is option A, 9. Okay, next question, how many except statements can a try except block have? Correct answer of this question is option C, more than 0. Okay, there has to be at least one except statement in a try except block. Okay, next question, when will the else part of try except else be executed? Correct answer of this question is option C, when no exception occurs. Option C. Okay, the else part of the try except else be executed when no exception occurs. Okay, next question, when is the finally block executed? Okay, the finally block is always executed in a exception based program. Okay, so correct answer is option D, always. Okay, finally block always executed. Next question, in the following options, which are Python libraries which are used for data analysis and scientific computations? Option A NumPy, option B SciPy, option C Pandas, option D all of the above. Correct answer here is option D, all of the above, because NumPy, SciPy and Pandas, अगर आपने name सुने हैं, it's well and good, नहीं सुने हैं तो they all are very core libraries. And in the following options, which are Python libraries which are used for data analysis and scientific computations? Option A NumPy, option B SciPy, option C Pandas, option D all of the above. Correct answer here is option D, all of the above, because NumPy, SciPy and Pandas, अगर आपने name सुने हैं, it's well and good, नहीं सुने हैं तो they all are very core libraries guys, and इनका use आप major level पर करते हैं data analysis and scientific computation perform करने के लिए in Python language. Okay, so correct answer here is option D, all of the above. Okay guys, now let's wind up the lecture. Thanks for watching this video. If you like the video, please hit the like button and make sure to subscribe to my channel for more updates.